ہائے جانیز، آج میں بہت اداس ہوں، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ میں اپنی اس اداسی میں تنہا نہیں، میرے ملک کے لوگ میرے ساتھ ہیں. Losing a hero, and a real one at that, can be a very painful experience. لیکن ایسے لمحوں میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر یہ سمجھیں کہ لوگ مر جایا کرتے ہیں، لیگیسیز زندہ رہتی ہیں. محمد علی departed for his final abode. اللہ انہیں جنت نصیب کرے. اور کیوں نہیں، جس انسان نے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر، سوچ پر، جذبات پر، احساسات پر انمٹ نقوش چھوڑے ہوں، وہ انسان ہمیں چھوڑ کر نہیں گیا، کیونکہ وہ ہمارے پاس بہت کچھ چھوڑ گئے، یادیں، باتیں اور محبتیں. As the nation is busy paying glowing tributes to this legendary actor, میں یہاں یہ کہنا ضرور چاہوں گی کہ محمد علی نے اپنی اداکاری سے، اپنے فن سے، اپنی ذات سے کئی جنریشنز کو انسپائر کیا، and he continues to do so and will do so for times to come. اچھے اداکار تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن ایسے اچھے لوگ بہت کم. زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ میں ان کی علالت کے دنوں کے دوران ان سے مل نہ سکی، لیکن کوئی بات نہیں، ایک دن تو پھر ہم سب کو اکٹھا ہونا ہی ہے، وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ پرویز بھائی کے وعدے جیسا نہیں جو پورا نہ ہو. ویسے وعدوں کے معاملے میں اسامہ پرویز بھائی پر سبقت لے گیا. یہ میں تھوڑی کہہ رہی ہوں، یہ تو قاضی صاحب نے فرمایا ہے. ہائے، میں تو حیران ہی رہ گئی یہ جان کر that my darling Nawaz was not made the Prime Minister by Uncle Sam, but he was made that by Uncle O. Sam R. Hey, and look, all our politicians wanting to be prime ministers keep running to the wrong uncle. ویسے بھی انکل سیم کو تو صرف پرویز بھائی ہی پسند ہے، بٹ آئی ایم شیور کہ پرویز بھائی کو دونوں ہی انکلز عزیز ہیں، شوکت کی طرح. ہائے، میں تو بہت بھاگتی ہوں، میراتھنز میں نہیں، کبھی کبھی آنٹی پارک میں، بٹ موسٹلی سیاست سے. ہائے، لیکن بھاگ کر بھی جاؤں تو کہاں جاؤں؟ پہلے وہ انڈین فلمز دیکھ لیا کرتی تھی، بٹ ناؤ آئی کانٹ ایون واچ دوز. آئی مین فرسٹ the Indian films were only pirated. Now they're more and more X-rated. اور آپ تو جانتے ہیں کہ اس معاملے میں میں بہت شریف ہوں، شہباز کی طرح نہیں، بابرا کی طرح. God, these Indians seem to be confusing their film industry with their sex industry. I mean, being sexy is one thing, but being sleazy is another. And I definitely prefer the former because I know I'm so that. Anyways, coming back to films. Hi Sangeeta, hi Noor Sahab, hi Shweeto Sajjad. Please, ایسی فلمیں بنانا شروع کر دو جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، مائنس دا ولگیرٹی. یہ میرا وعدہ ہے کہ پھر فلمیں پٹیں گی نہیں، ہٹیں گی. And you know what? To make it all the more better, I will personally come to all your premieres, and then you see how I draw those crowds. وہ کہتے ہیں نا, strike when the iron is hot. I say, it's iron when it's hot. Talking of hot, I have one of the hottest models of our country with me here in my house. The reason I like her so much, اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ صرف بہت خوبصورت ہے، بہت سکسیزفل ہے، بہت پیاری ہے. اس کی میجر وجہ یہ ہے that she is a very opinionated person. اور ہر وہ عورت جو opinion رکھتی ہے، سوچ رکھتی ہے، پیشن رکھتی ہے اور جذبہ رکھتی ہے، مجھے پسند ہے. Unlike a model, she is very private and is happily married. I'm not going to keep her waiting for too long. Step right in. Tania Shafi. Tania Shafi. Come here, darling. Tania. So wonderful to see you, really. It's great to see you too, and I love the sari. You look gorgeous. Thank you, Meri Jaan. The last time I saw you, beta, you were this small. And then you went away to London. Yes, I know. They shipped me off for a long time. And you came back such a big, beautiful girl. Thank you. اب تمہیں میں بیٹا نہیں کہوں گی. اچھا جلدی سے مجھے یہ تو بتاؤ
कि तुम्हारी इतनी खूबसूरत complexion, इतनी खूबसूरत skin, इसका राज क्या है? English? Oh God. You're being I very know, mean. darling, You're you hate asking this me a question. question that I absolutely abhor. You know, I keep saying this to everyone who asks me this. I mean, for the last 13 years, doesn't anyone realize that I'm constantly asked this? And my skin's not that beautiful, it's the makeup. So, and the makeup has destroyed it further. So it's not, one tries to look after it. You know, my skin type changed with all the excessive makeup wearing. So I suddenly realized I couldn't function with soap and water. So you know, you have to keep changing your product depending on whatever's going on with your skin. You know? Hey Jan, but I have to confess, you took my question so seriously. मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी because I know so very well that you hate this question. I hate this guy. That's one, but my pet hate is how did you start in the business? That one I really hate. Yeah. Acha Tania, tell me one thing. How did it all begin for you? See, you're doing, you know, it's, I feel sometimes like a broken record, but okay, let me try and do this like as snappy and quick as possible. My cousins are designers, Sana Safinas, as well as Shamal. She's my second cousin. So it all started with my doing shoots and shows for them. So my first shoot for Herald was Sana Safi, and then after that I did a pajama shoot for Cotton and Cotton with Tappu, who's again a really old family friend. He was in class with my eldest cousin. So there were all these connections, you know, my really good friends of my parents are sort of Newsline as well, so I did a lot of work for them. Visage being one of the few fashion magazines at the time, you know, at that time, if I'm not mistaken, there was Libas, Visage and Fashion Collection. That was it, pretty much. And that's it. And then slowly grew. The first ads I did were with, well, commercial projects, let's just say, were with Manhattan, BBDO, and with Prestige, both of which used to handle the advertising for like my family's business concerns, whatever they were. I don't remember in detail, but so it started as this sort of just with references, and then it just grew and grew as the business has, I guess. You know, I just wanted to have a trip down nostalgia lane. And I wanted to remember because, you know, I've been through all this myself, been photographed so much in magazines and all that. But, you know, those were the good old days. You are a very opinionated girl. Am I? You are. And you're outspoken, well-spoken, confident. A girl like you, how does show business or the fashion industry really take to you? It's surprisingly quite well, actually, I think. I mean, I'm still here 13 years later. I don't have really major issues with anybody. I think I'm pretty straight up if I have a problem or if I'm not getting along or I'm not getting a good vibe. It's very clear. I don't really... I've always been like... I try very hard. I mean, my thing is that if you agree to do something, you should do it to the best of your ability and should do it as professionally as possible. Any kind of pressure situation and I switch So off. you have been acting also. Yes, मुझे I तो खैर tried कभी that. TV पे acting का मौका नहीं मिला, but you know I've had to act enough with men. You know how it is, darling. ना चाहते भी acting करनी पड़ती है. Tania, I ask you this question, keeping in view that you've lived in London and Actually, of course out of growing London. up Yeah, out of yeah, London, out but of growing London, up there, yeah. watching their media and coming back and acting here, how has the experience been for you? I didn't want to get into it for the run-of-the-mill reasons. You know, I did study drama in England, but you know, I was doing Shakespearean monologues. So here I was, when I first got into acting, courtesy of Sajid Hassan, who sort of dragged me and kicking and screaming, as I always say, with a foreign language. I mean, it would be like, you know, putting someone on set with Greek. And I just really wanted to get my head around it. So to me, I feel like it's been 3 years of one big Urdu lesson because I learned to read on the job, which has given me tremendous fulfillment. हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी तुमने शादी का जिक्र किया. You spoke about being lucky, Yes. about in the men that you've had in your life. You've been married for 10 years, Actually, just over 11. just over Yeah, 11. yeah, How's the experience been for you? How would you? Absolutely fantastic. Absolutely fantastic. Really, I mean, I've been so fortunate because it's, you know, it's difficult. I am a mix. I have lived abroad. My father was educated abroad. You know, it does affect you in a different way. You know, it does yield a different personality type to all the scores of kids that didn't get that sort of exposure.
So I'm unusual. I'm aware of that. So I think it's actually very, very cool of him and his whole family, who I love madly, to put up with me for that long. And you know, with the work schedules and all of that. Already. I don't know too many people. I envy you already. MashaAllah, I'm so happy for you. Must be a very good man. अभी तक तुमने मुझे नहीं मिलवाया उससे. Well, one of these days. I must meet him after You hearing. must invite him too and I chat will. to him. What's his star? He's a Scorpio. Oh, they're the most difficult ones to deal with. You must take his name because he, to my mind, I think he's one of the best artists in this country, Anwar Shafi Khan. Yes. So you must invite him, but you're not allowed to flirt with him. You can't. Well, darling, me, I never do. If you love me, you're not allowed to do but that. I never do. Okay, don't you realize? It's the men. I'll beat him if he makes a pass at you. You must do that. पहले से समझा के भेजना उसको. You know, it's so embarrassing for me sometimes. I will, how these men come and react to me. You must get swamped, darling, all the time. All the time, darling. You have no idea. You have to stop looking so sexy then, I tell you. That's the only way. Talking of looking sexy, the sexiest girls in our fashion industry today. I'll take your name. I'll include Vinny in the list. I hate being thought of as sexy. I don't know why. I hate ZQ. it. Yeah. और मैंने सुना ये है, मुझे तो खबरें पहुंचती रहती है ना, you know, and it's the nature of our society. Of course, darling. मैंने सुना ये है that you guys operate like a gang. Oh, I don't. In what sense? मैंने सुना अपना एक छोटा सा माफिया बनाया हुआ है तुम लोगों ने, designers को, choreographers को, event managers को बहुत सताती हो. Really, honestly, do people say? I don't know. I don't agree with that. I think we're all really different. All three of us are very, very different. The lot of us, there's not just the three of us. There's Iraj and you know, there's Iman and there's Amna and there's you know, and honestly, I think we're all radically different human beings from each other. So I don't think you can lump us in a pile. I think that's too much generalization and. We don't all work with the same people either. Like I'm a lot more limited with my sphere of reference. You know, I don't work with as many people. I don't do as many shows. I don't do as many shoots. I don't, you know. So I'm a very different trip. But no, I don't think. I think in the event that there's something going hideously wrong, to fought with anybody over any. But you know, I'd love to travel with you girls. Well, yeah. Well, how is it spending so much time together? And I see most of the female models here. Are very close and they're like it's like boarding school, you know. That's the best thing I can compare it to, having been to boarding school, because you know you live with each other for those 2-3 days. If you're on a traveling show, it's ages. You know, sometimes we'll have the boys as well. You know, and again the senior girls, we've seen all these kids come in. You know, there were 2.5 of us from the you know, the old days are still doing this. So it's like a family to a degree. I feel like they're siblings, and even if someone's, you know, fighting or having issues or there's kit, at the end of the day, I think we have learned to come together as a team. And you know, there's not that many of us, so we will end up being together doing pretty much all the shows. But you know, you're so lucky that way also, that you are one of those. You have happy married life. You've been living with your husband for 11 years. You still continue to enjoy your modeling and your traveling and your bonding. But for most of the girls that I see, मुझे बड़ी उनकी फिक्र होती है. मुझे लगता है कि जिस तरह sometimes they get so lost in their career and the pursuit of other things which are not, I'm not saying that they're not so important, but जो एक main ज़िंदगी का मज़ा होता है, जो लुत्फ़ होता है, जो एक बंधन होता है, उससे deprived रहती हैं. I don't know. I mean, Rabab's married. You know, all the girls that are like the girls that were there when I came in, that batch, they're all married. I mean, look at Simi. You know, Simi's been around for ages. She still does a great job, and I love that she's woman. Brilliant. She's brilliant. Really she's is. I mean, for example, the main one that I can speak for is ZQ, because she's like my conjoined twin practically. I love ZQ madly. She stays with me every time she comes into town, and she's. I can safely probably say I'm closest to her in the entire pile, you know. But with Zeeks, so she got into the whole TV thing, even the ads, later on, and then she loved it. She loves it. Hi, Jani, तुम आई बैठी हो, मैं भी हूँ यहाँ पर, and you know how concerned I am about these girls. I try, मैं तो हर वक्त ढूंढती रहती हूँ कि कोई सही match मिल जाए. किसी के लिए तो मैं शादी करवा दूँ. Not good enough out there for our girls. नहीं, but I've called in a man. Nobody thinks about that. I've called in a man. Keep this to yourself. He is married, but I think he's still open to a relationship. Good gosh. So they mustn't endorse such things. No, maybe a marriage even.
हाय हाय हमारी religion ने 4 इजाजत दी ना तानिया, but but we'll come and discuss that later. Yeah, I don't see Let too me many call in people my guest. being down with that somehow. I don't know too many women these days that are down with that. But hey, again, each to their own. Of course, darling. आपके लिए and for you एक बहुत hot सियासतदान, hot इसलिए भी because he's been in great demand lately. बड़ी offers मिली, बहुत बड़ी offers मिली, but he did not break his loyalty and he stuck with his party. और मुझे उसकी यही quality बहुत पसंद आई. Step right in, नबील गबोल, सरदार नबील गबोल. Sardar Nabeel Gabool. You know, I love the Sardar in your name. And by the way, you're the first Sardar who's come to my drawing room. Really? And I'm honored Tell to be me. here. बहुत अरसे के बाद जब से प्रोग्राम शुरू किया, उससे पहले तो बहुत सारे सरदार आते थे. अच्छा. बल्कि समझे यहीं आते थे बस. अफसोस मैं पहले आपसे नहीं मिला. ये बताओ कि किस किस्म के सरदार हो तुम? मैं असली सरदार हूँ और अपने कौम के लिए सरदार हूँ, लेकिन दूसरों के लिए नहीं हूँ. जैसे कि मैं अपने आप को कहता हूँ मेरी ड्यूल पर्सनैलिटी है. जिस तरह लियारी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लियारी का कल्चर आपको पता है डिफरेंट है, वहाँ ये सरदारी नहीं चलती है. आई नो जान, आई वाज नॉट, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछ रही थी, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम असली सरदार हो. आई रिमेंबर द सीनियर मिस्टर गबूल अहमद आया करते थे विद हिज मदर. दे यूज्ड टू कम टू माय, हमारे लंचेस पे आते थे, डिनर्स पे आते थे. दैट टाइम ही वाज वेरी स्मॉल, तुम बहुत छोटे थे. यूज्ड टू बी इन दैट टाइनी लिटिल प्रैम विद दोस टाइनी लिटिल हैंड्स एंड टाइनी लिटिल फीट. अब तो तुम्हारा सब कुछ ही बड़ा बड़ा सा हो गया है. दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. अच्छा, मुझे ये बताओ नबील, द फर्स्ट थिंग आई वाज गोइंग टू आस्क यू, मैंने सुना कि पीपल्स पार्टी का कोई लीडर अब मेरे से मिलने नहीं आ सकता. ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो नहीं सुना है, मुझे तो मना नहीं किया. मैं आया हूँ आज आपसे मिलने. आई थिंक इस तरह के जो लोग हैं वो आई मीन हो सकता है आपसे जेलस होते हो. हाँ, इस तरह के लोग जेलसी तो बहुत होती I है keep तानिया. telling you, you have to I stop wearing know, the Jani. sexy You know sarees. how it is. You just know how it is. पता नहीं लोगों का ज़र्फ You're इतना just छोटा क्यों हो जाता है. agitating all these women by looking so attractive all the But time. darling, I don't even try. I mean, but this is me, you know. Terrible. Nabeel, you are an MNA from Liari. और ये सीट आपकी फैमिली में 3 जनरेशन से है. पहले तो मुझे बताओ कि हाउ इज इट बीइंग एन MNA, स्पेशली दीज डेज. तानिया, यू नो, आई वाज आल्सो ऑफर्ड membership of the National Assembly. मैंने कहा डार्लिंग, आई एम हैप्पी विद माय सिंध क्लब मेंबरशिप. हाँ, यू बेटर रिमेन आउट, बिकॉज अगर आप असेंबली में होती तो बड़ा झगड़ा जो है आपके पीछे हो जाता. हाय माय गॉड. अच्छा बताओ, हाउ इज इट अभी जो प्रेजेंट असेंबली है, कितनी क्रेडिबल है, एंड व्हाट गोज ऑन देयर रियली? इट्स वेरी टफ नाउ बिकॉज ऑपोजिशन में रहते हुए, और आपको पता है कि ये जो हालात चल रहे हैं, वी आर फाइटिंग सिंस 2002. और उसके बाद जब हमारे मतलब जो डिमांड्स थे जो माने गए और हमने जो स्ट्रगल की जिस चीज़ के लिए, उसके बाद हम जाके असेंबली के चेयर पे बैठे. दैट्स very tough and still we are going I mean there are lots of crises going in the country. post 9/11 के बाद जो सिचुएशन हुई है पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद जो इम्पोर्टेंस पाकिस्तान को मिली है, और हम समझते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल में इतना मशहूर हुआ है, पाकिस्तान के जो रोल है, और स्पेशली आप देखें कि लास्ट वीक प्रेसिडेंट बुश भी आए थे, और ऐसे हालात में हमारी जो रोल है अपोजिशन की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो जानी, बुश वाज ओवर, बड़ी उसने, आई मीन आई टोल्ड माय व्यूअर्स बिफोर आल्सो, तानिया वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया. आई मीन आई वेंट टू द बैंक्वेट एंड द मैन वुड जस्ट नॉट, आई मीन ही वाज जस्ट सो, आई डोंट इवन नो व्हाट टू से रियली. बट देयर वाज अ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग बुशेस विजिट. आपने कहा कि आपकी पार्टी खैर मकदम नहीं करती है. मखदूम अमीन फ़हीम ने स्टेटमेंट दी कि वो खैर मकदम नहीं करेंगे, and you said that there was nothing wrong with, and you guys will not boycott his visit. What was that controversy about? There was no controversy. मखदूम अमीन फ़हीम साहब हमारे बड़े हैं, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट हैं, हमारे लीडर हैं नेशनल असेंबली के अंदर, और नेचुरली जो statement वो देते हैं, that is the correct statement. There was some misunderstanding actually. The timing of the statement was
आई मीन मेरा जो हमारी जो फॉरेन लियाज़न कमेटी की जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, उसकी मीटिंग थी, उसके बाद पता चला कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस एक हुई है और उसमें कहा गया है कि एमएमए ने ये कहा है कि ब्लैक डे हम मनाएंगे प्रेसिडेंट बुश के आने पर, जिस पे मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी कि जी हम ब्लैक डे नहीं मना रहे हैं प्रेसिडेंट बुश के आने पर, हम सिर्फ नामों से रिसालत जो ये कार्टून का जो सिलसिला चला उसके ख़िलाफ़ हम एमएमए का साथ दे रहे हैं इस तहरीक में और इस स्ट्राइक में. दैट्स ऑल. दैट वाज सम मिसअंडरस्टैंडिंग जो मीडिया ने उछाला. Nabeel, being a strong opposition, and I'm happy you said strong, and I completely agree, and that's why I like my opposition also. You know, I like everything strong, my tea and my men, everything. Strong opposition की बात हुई, तुम्हें offers भी बहुत मिली. Patriots बन गया, and if I'm not mistaken, you were one of the first ones to be offered to break away, and you were offered ministership also. Tempting तो बहुत होगी. Offers tempting तो होती ही हैं. कभी नियत डगमगाई? देखिए, वन थिंग आई बिलीव कि इंसान के अंदर अगर लॉयल्टी ना हो तो आई थिंक कि वो उसकी जो है इज़्ज़त नहीं रहती. मैं समझता हूँ कि मैं जिस पार्टी को बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और जो हमारी लीडर है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनकी जो स्ट्रगल है इस मुल्क के लिए, और अगर वो क्राइसिस में है, और मैं समझता हूँ अगर कोई अपने मोशन को क्राइसिस के दौरान अगर छोड़ देता है और लॉयल्टी चेंज करता है तो उसके अपने घर में भी इज़्ज़त नहीं होती. तो अगर मैं भी डिसलॉयल्टी कर लेता तो मुझ में और उनमें क्या फ़र्क होता. हमारी फैमिली शुरू से गबोल फैमिली और भुट्टो फैमिली, मेरे ग्रैंड फादर एंड बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की जो ग्रैंड फादर हैं, उस वक्त की हमारी फैमिली फ्रेंडशिप, तो ऐसे हालात में छोड़ना. So well, I remember those lunches I was telling you about. ना ZAB used to be there all the time. Your father used to be there also sometimes. मुझे ये बताएं आप नबील, के अभी हम बात कर रहे थे changing of loyalties and how one should stick to one's party. You know, I'm very fond of मखदूम साहब also. आए थे मेरे पास, तब भी बड़े offers मिली उनको प्राइम मिनिस्टर बनने की, but he turned them down. Do you think that was the right move on his part? अगर आप मखदूम साहब की जगह होते तो आप क्या करते? देखिए, वी हैव टू फॉलो द पार्टी पॉलिसी, वी हैव टू फॉलो द गाइडलाइन ऑफ द पार्टी लीडरशिप, और हम अपनी तरफ से कोई मूव नहीं कर सकते until unless there is no instruction from the party chairperson. और जो मूव मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 2002 के इलेक्शन के बाद किया, आई थिंक अगर जनरल मुशर्रफ ये कहे कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे काबिल कबूल है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुझे काबिल कबूल नहीं है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विदाउट बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कुछ भी नहीं है, बिकॉज उनके वो लीडरशिप में जो है पार्टी चल रही है. तो आई थिंक वो डिसीजन मखदूम साहब की बहुत अच्छी थी. आज मखदूम साहब की इज़्ज़त भी इसीलिए कि उन्होंने जो है वो ऑफ़र प्राइम मिनिस्टरशिप का जो है ठुकरा दिया, और इस तरह हमें सिंध की चीफ मिनिस्टरशिप भी मिल रही थी, हमने वो भी ठुकरा दी. तो आई थिंक कि आज हमारी इसलिए इज़्ज़त कि हमने एक स्टैंड लिया है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने इतने 57-58 ईयर्स जो हुए हैं पाकिस्तान बनने के बाद, जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसूल की सियासत की है किसी पार्टी ने नहीं की है. आप देखें आज जो गवर्नमेंट में पार्टी है, वो तो अव्वल तो इनके नाम कितने चेंज हो गए. आप देखें PML कायदे आज़म से शुरू होते होते ये PML तक पहुंच गए, इनको खुद नहीं पता ये कौन से PML हैं. तो किंग्स पार्टी मुशर्रफ साहब को पसंद आ गई, कुछ चेहरे उन्होंने बना लिए उनकी गवर्नमेंट. 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए इस 3 साल के दौर के अंदर. आई डोंट सी एनी डेमोक्रेसी. अगर जनरल मुशर्रफ मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि जी अगर बेनज़ीर भुट्टो वापस अगर मुल्क में आती हैं तो उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी, तो ये किस टाइप की डेमोक्रेसी है जिस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इस मुल्क के लिए इतनी कुर्बानी दी है. You such a Jani, really you are. I'm so fond of you and I know of all your loyalty. मुझे सब पता है. चलो हम कुछ आसान बातें भी करते हैं. वैसे भी तुमने बात की ठुकरा देने की. एक तो ये सरदार और ये मखदूम्स जो हैं इतनी आसानी से सब कुछ ठुकरा देते हैं. क्या मोहब्बत भी इतनी आसानी से ठुकरा देते हो नबील? मोहब्बत आई थिंक बहुत कम लोग ऐसे हैं खुश नसीब जिनको सच्ची मोहब्बत मिलती है. अगर सच्ची मोहब्बत मिले तो उसको कोई नहीं ठुकराता. है मेरी जान इस मामले में बहुत खुशकिस्मत है. क्यों तानिया, तुम्हें तो तुम्हारी सच्ची मोहब्बत मिल गई. तानिया, you have a political, I mean in the sense your father for the elections he was into politics. Your family has had long history
I lived in the city. We got married and we lived in the city at a time where we were actually contemplating, welding in iron doors in our bedrooms, and we used to have very serious discussions on if, because everybody around us was getting held up and, dacoits and all of this, and having very serious discussions as to what we do if somebody invaded our house, and how we'd either blow them away with a sawn off shotgun, and my husband wanted to teach me how to use a gun, and everyone you knew went through something or the other. I mean, my husband was shot at 3 times. People trying to get his car. Look, and poor thing. But are you trying to say? I just feel a lot safer today. Are you trying to say I quite like our general, that you frankly. like the I want president? him to stay. You want the general to stay? Yes, I Hi, like लो it. परवेज भाई. I'm एक not और saying- वोट आपका हुआ. No, एक तो I'm these not saying- women, I quite tell frankly, you, I don't know I why I think women they're like. smitten by the charms only. I don't know why I'm women just like the saying- general. Honestly, well, it's whatever. But quite honestly, I do, I didn't get up and vote, and I kick myself for that, because then if I have a problem with the result, then I have only myself to blame. अभी आप मेरी प्यारी से तानिया को कन्विंस करेंगे कि डेमोक्रेसी अच्छी क्यों है. Actually, Maybe Tania, I'm a she's reaction talking to my for family, herself because yeah, purely for myself. she's talking for herself. And I'm like the she's not spoiled brat thinking about. reaction to She's my not thinking family. about the normal people living on the streets. Who are also having a rough time the of it. people who are suffering now. आप देखें the price of sugar is 45 rupees per kg. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में 15 रुपए के जी 10 रुपए के जी होता था. आज आप पेट्रोल डीजल की कीमतें देखें. आई एम टॉकिंग अबाउट people, you're talking about yourself that you're happy with the Actually, no, general, I'm not. but I mean, just go and come to Lyari. Actually, I invite you also, and I invite you also. कुछ कहूँ, आपने मुझे इतनी इज्जत दी, मुझे लियारी इनवाइट किया. आप लियारी ज़रूर चलेंगे क्योंकि आपको लियारी वाले बड़े पसंद करते हैं. भाई मुझे भी लियारी वाले बहुत पसंद है. मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन आपके साथ में लियारी नहीं चलूँगी. मेरे साथ नहीं चलेंगे. आए चलना है तो कहीं पेरिस चलें, न्यूयॉर्क चलें. सरदार साहब हैं आखिर आप. लंदन देखिए, चलें. मेरे लिए लियारी न्यूयॉर्क है, मेरे लिए लियारी लंदन है, मेरे लिए लियारी पेरिस है. Because हाय, मेरे लिए लियारी है, लंदन है, what I और am पेरिस है. What I am today, it's because of क्या लियारी में 900 फुट लंबा टावर खड़ा है? आपको खड़ा करके बता देंगे. आप आए तो सही लियारी में. लियारी के लोग जो है रातों रात कमाल कर जाते हैं. अभी मैं एक बहुत अच्छी डिबेट शुरू करने वाली हूँ. चलो कुछ साल पहले चलते हैं. भुट्टो साहब की नेशनलाइजेशन की तरफ चलते हैं. Oh, please, Your let's not go family, there. your I beg you, family let's not go Actually, there. she has suffered. Her family has suffered because Oh, was a Lord. personal victim. being friend of late Bhutto, Shahid Bhutto, her family has suffered because of that. That I just think, I think politics is just like a... Marriage is very successful. लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ क्या आपकी बेगम आपकी पहली मोहब्बत भी थी या पहली मोहब्बत कोई और थी? Well, that's a secret, but मैं समझता हूँ कि कोई कहते हैं ना, कोई जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो. तो हर जवानी के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है. मेरी टोटली अरेंज मैरिज हुई थी. एंड जब आदमी शादी कर लेता है तो पास्ट की जो बातें हैं जवानी की, आई थिंक उसको दोहराना नहीं चाहिए. पास्ट इज पास्ट, इट्स गॉन. है लेकिन पास्ट की यादें बहुत अच्छी नहीं होती, मीठी मीठी सी. आदमी आगे बढ़ना चाहिए. आई थिंक Come on, Jackie. No, but I miss my memories. मुझे तो हर कहानी इतनी. Have a heart, एवरीबॉडी हैज अ हार्ट. Yeah. मेमोरीज नेचुरली होते हैं इंसान के दिल में, कभी भूलता नहीं है इंसान. लेकिन ये है कि भुलाना पड़ता है. कुछ मजबूरियां, कुछ हालात ऐसे आदमी को आगे बढ़ना पड़ता है. हाय, तुम्हारी मेरी उम्र में इतना फ़र्क ना होता तो शायद तुम्हारे साथ खुलकर सारी बातें कर लेती. But I still remember that little baby in that tiny little pram with the tiny little hands and the tiny little feet. You remember the story, ना? That's a compliment. अब तो देखो सब कुछ बड़ा बड़ा सा हो गया. मैं पूछ रही थी या हम बात कर रहे थे मोहब्बतों की. नबील, तुम एक वफादार आदमी हो. मुझे बताओ कि क्या वफ़ा के बदले में वफ़ा मिलती है? मैं समझता हूँ कि वफ़ा के बदले में वफ़ा बहुत कम लोगों को, बहुत खुशनसीब लोगों को मिलता है. और जो इंसान ख़ुद अगर लॉयल होता है, ज़रूरी नहीं है कि अगला भी आपके साथ लॉयल रहे. मेरे साथ तो ऐसी बहुत सारी एक्सपीरियंस हुई है. इवन
کبھی کبھار تو ایسا ہوا ہے کہ میرے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں اگر میں کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہوں یا اگر اس کے 10 کام میں کروں، اگر 11واں کام اگر اس کا نہیں کروں تو وہ بھی باہر کھڑے ہو کر جو ہے میرے خلاف نعرے بازی کرتا ہے کہ جی میرا کام اس نے نہیں کیا. تو کوئی کسی کے ساتھ وفا، لیکن ایٹ لیسٹ آپ یہ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ اگر وفادار ہیں اور لائلٹی آپ کے اندر، اب میں ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتا ہوں. آئی تھنک ایکسپیکٹیشن رکھنا بیوقوفی ہے. میرے ساتھ تو یہی ایکسپیرینس ہوئی ہے. غلط جگہ پہ ڈھونڈتے رہے وفا تم. اب آپ سے بہت عرصے بعد ملا ہوں، لیکن افسوس بہت سال پہلے مل لیتا تو کافی اچھا ہو جاتا. کیا اچھا ہوتا. I'm definitely the Huddy. میری تعریف کرو، مجھے اپنی تعریف سننا اچھا لگتا ہے. مجھے بھی اپنی تعریف سننا اچھا لگتا ہے. I'm so the Huddy right now. In this kebab. Should I leave? دیکھیے تو I won't صحیح. take it personally. آپ میری تعریف کریں، میں آپ کی تعریف کروں. نبیل دیکھو تو صحیح. تانیہ تم بھی دیکھو قسمت کی ستم ظریفی کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے. آپ اتنے اداس نہ ہوں. آپ کو میں لیاری لے چلوں گا تو وہاں پر ضرور آپ کو کوئی آپ کے جیسا غمگین اور آپ کے جیسا. ہائے اللہ نہ کرے کہ میں غمگین ہوں. وہ تو میں کبھی کبھار ڈرامہ کرتی ہوں. اللہ کا شکر بہت خوش ہوں نبیل گبول. اچھا, how do you spend your time? Who is the real Tania Shafi? I really love reading. I'm a reader. I love hanging with family. I'm very close to all my cousins. I have a lot of friends. I'm lucky. I don't have kids of my own, so I quite enjoy seeing their kids and seeing their kids grow up. So I feel sort of like I'm vicariously mothering them. And that's about it. I'm not the adventure seeker kind of person. I don't really like leaving home, and I like traveling, but on occasion. I don't like the actual process of packing and getting on a plane. And as I said, I'm marginally lazy. You know, I'm not that super hyperactive, and you know. But yeah, a good book, or good family, good friends, good conversation, and I'm good to go. Great. And of course, watching movies. And what kind Which is of something movies I do you have like? to do. And what kind of movies? What kind of movies do I like? All kinds. You know, it depends on the mood. You know, if you want a sort of pick-me-up, happy, big sort of, you know, crazy adventure or escape sort of. I love period pieces though, and I love anything. I love history. So I mean, anything that I read will be sort of have something to do with history. So that's my thing. Darling, I'm very futuristic. I'm very futuristic. Oh, you're into sci-fi? ہاں, میں تو ہسٹری سے بہت بور ہو گئی ہوں. اتنی لمبی ہسٹری ہے نا میری کہ تھک جاتی ہوں یاد رکھ کے بھی. ہاں نبیل صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ آپ اسپیکر بھی رہے سندھ اسمبلی کے. How was it being the speaker of the Sindh Assembly at that time? I think for speaker it is very difficult to run the assembly when the opposition is not there or the opposition is not happy with the speaker. Actually جو اسپیکر ہوتا ہے وہ اسمبلی کا he is the custodian of the assembly. He has to maintain the balance between the treasury benches and the opposition. میرے ٹائم پہ اس وقت MQM opposition میں تھی and the leader of the opposition was فاروق ستار تھا. تو کافی عرصے 3-4 مہینے تک بائیکاٹ پہ تھی opposition. اور اس وقت کافی ہم کوشش کرتے تھے, اسپیشلی مائی سیلف بینگ اے اسپیکر. میں یہ چاہتا تھا کہ بیکاز اگر میں اپنے لیفٹ میں دیکھتا تھا تو اپوزیشن کی بینچز خالی ہوتی تو مجھے مزہ نہیں آتا تھا ہاؤس کی پروسیڈنگ چلانے میں. تو میں نے کافی کوشش کی اپوزیشن کو منانے کی, اور چیف منسٹر صاحب عبداللہ شاہ صاحب تھے, انہوں نے بھی کافی مجھے اتھارٹی دی کہ آپ ان کو منا کے اسمبلی کے اندر ہاؤس کے اندر لے کر آئیں. تو دیٹ آئی ڈیڈ, اینڈ اس کے بعد پھر اپوزیشن نے بائیکاٹ ختم کی. اور میں یہی کہتا تھا اپوزیشن کو کہ آپ کو جو بولنا ہے, آپ کو جو بڑاس گورنمنٹ کے خلاف نکالنی ہے, آپ ہاؤس کے اندر آئیں اور آپ اپنی بڑاس نکالیں. انفیکٹ اتنے کبھی کبھی گرما گرمی ہو جاتی تھی کہ لیڈر آف دا اپوزیشن فاروق ستار صاحب ہوتے تھے تو وہ بہت شور مچاتے تھے کبھی کبھار. اور میں جب دیکھتا تھا جب ماحول بہت ٹینس ہو جاتا تھا اسمبلی کی, تو اس وقت میں یہ کہتا تھا کہ کچھ ایسی بات کہہ جاتا تھا کہ جیسے میں نے ایک دفعہ فاروق ستار صاحب بہت شور مچا رہے تھے, تو میں نے فاروق صاحب آپ بیٹھ جائیں. وہ نہیں بیٹھ رہے تھے, اور وہ تقریر اپنی انہوں نے شروع کی اور وہ بیٹھ نہیں مان رہے. تو میں نے کہا فاروق ستار صاحب اتنی اگر میں منت ریما کی کروں تو وہ لاہور سے بھی آ جائیں اور آپ نہیں بیٹھ رہے ہیں. تو اس پر جو ہے وہ بیٹھ گئے اور وہ ہنس کر انہوں نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی. یہ کرنا پڑتا ہے اسپیکر کے لیے. He also came over the other day. Very nice man. کافی اچھے اور سلجھی ہوئی شخصیت کے مالک ہیں. ابھی تو آپ کی نیز کی شادی بھی ہو گئی MQM کے چیف کے ساتھ. ہاؤ ڈو یو گیٹ آن ود, آپ کے کس قسم کے تعلقات ہیں ود
the chief? ताल्लुकात हमारे अच्छे हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, रहेंगे, अपनी जगह हैं, बट ताल्लुकात चूँकि मैंने जैसे आपको कहा कि डेप्यूटी स्पीकरशिप के ज़माने से उनके साथ पॉलिटिकली ताल्लुकात थे, उसके बाद फिर ये जो कुछ रिश्ता हुआ मेरे कज़न के डॉटर के साथ उनकी, तो अच्छे ताल्लुकात हैं. इनफैक्ट इतना ज़्यादा उनके साथ राब्ते नहीं रहते, लेकिन ये है कभी कभार अगर लंदन जाना पड़ता है तो मुलाकात हो जाती है, लेकिन नॉन पॉलिटिकल. मुझे ये बताएं कि आप जैसे लॉयल्टी की बात करते हैं, बट isn't politics a game of disloyalty? I mean, partnerships are changing, new alliances are being made. कल के दुश्मन आज के दोस्त. अभी देखो बीबी एंड नवाज have become बहन भाई. You know how convenient. तो ये क्या गेम है सियासत? देखिए गेम नहीं है एक्चुअली. इस वक्त मुल्क जो क्राइसिस से गुजर रही है, इस वक्त जो हमारी ऑपोजिशन है ARD जो हमने बनाई है, देखिए अगर हम यूनाइटेड नहीं हों तो हम इनको फाइट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज वी आर फाइटिंग जनरल विद अ जनरल एंड अ डिक्टेटर, और वो समझ नहीं रहे हैं. वो समझ रहे हैं कि उनकी डेमोक्रेसी जो है वो सही है, और हम समझते हैं कि ये जो है बराए नाम की डेमोक्रेसी है. हाय वो तो हम जानते हैं नबील, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि अकेले ही मूवमेंट चला लो? नहीं, अकेले देखें, अब हम हमारा भी जो है एजेंडा वही है जो मियाँ नवाज शरीफ का एजेंडा है. तो जब हम दोनों का एजेंडा एक ही है तो क्यों ना हम मिलकर यूनाइटेड होकर हम जो है फाइट करें. And we are fighting for the people. Tania, I was so shocked. I read this news item in the newspaper. Did you read I don't know whether you follow politics or not. काजी हुसैन अहमद ने इल्ज़ाम लगाया है. I don't even know who that is. काजी हुसैन साहब बहुत हमारे बुजुर्ग सियासतदान हैं, हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं. MMA के लीडर हैं, बहुत अच्छे हैं. तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म उसामा बिन लादेन ने बनवाया. इसके बारे में आपके भाई क्या कहते हैं? देखिए मैं नवाज शरीफ की तरफ से जवाब नहीं दे सकता हूँ, और अगर मेरे लीडर के बारे में कहते तो मैं शायद जवाब दे सकता, लेकिन मैं नवाज शरीफ की तरफ से. बट सरप्राइजिंग, आपकी लीडर ने भी कुछ नहीं कहा इस बारे में. मैंने कहा तो आजकल दोस्तियाँ ज़्यादा हो गई हैं शायद. वो बेल आउट क्यों करे नवाज शरीफ को, और उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उसामा ने. Darling, I meant otherwise, not bailing him out, but eating him, chopping him alive on this one. Osama bin Laden actually was very much against Mohammad Benazir Bhutto साहब when she was prime minister, और उनकी जो है गवर्नमेंट को जो है हटाने में काफ़ी उन्होंने प्लानिंग की थी, लेकिन he failed. और वो समझते हैं कि एक लेडी प्राइम मिनिस्टर होते हुए पाकिस्तान के, तो उनके खिलाफ थे ये तालिबान वाले. और बेनज़ीर एक्चुअली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शी इज़ अ वेरी ब्रेव वुमन. You are a woman, Tania. Also, how do you see Benazir as a politician? You know, I don't think that situation was absolutely fantastic when we were in democracy, and I'm not just talking about Benazir, I'm talking about the state of democracy. Darling, I just don't know if we can handle it, or we used to, because what about literacy? We don't have enough literacy. What did anybody do for literacy? Even now, I don't see that much, and I think that is the most crucial, important thing is education. And darling, I don't see it that accessible to all and sundry, and I think the quality of education that's available, you know, by and large, is really, really quite deplorable. You know, I must say, you speak so well, and you have such good points, really. और देखो सियासत से दूर है, अगर people's party से अगर इतने इख्तिलाफात ना होते, I'm really impressed because if she अगर assembly के अंदर, तो she would have been a very good speaker, and I think she speaks a lot, और इनको होना चाहिए था assembly में. My father would have agreed with you too, but I was नहीं, इतने इख्तिलाफात ना होते people's party से, तो मैं अभी सिफारिश करती नबील से कि जान को एक टिकट दे दो. See, that's the other thing. I just hate the Sifarishi system, and I think it's too entrenched in our culture. Well, one thing we know that my friend feels very, very passionately about politics and about this country's politics, although no matter how much she denies it. आपको ड्रामे देखने का शौक है? क्या देखने का शौक है? ड्रामे नहीं, मैं ड्रामे नहीं देखता. I don't believe in drama. I believe in real life. There's not enough dramatics in real life. If you ask me about watching movies, yeah, I do watch movies. But drama, I mean stage drama, या ये जो drama, I believe जो चल रहा है, political drama भी बहुत होते हैं. तो I believe drama is a fraud.
तो I don't believe in that. नहीं जानी, आई डिडंट मीन इट सो सीरियसली. मैं तो बात का रुख मोड़ रही थी. फिल्मों का तुमने जिक्र किया. किस किस्म की फिल्में देखते हो नबील? Romantic. रोमांटिक वाली ना? रोमांटिक Romantic वाली. अच्छा. ओह, आई लव रोमांटिक मूवीज टू. आई एम सो इनटू. व्हाट्स योर फेवरेट फिल्म? कोई अभी देखी अच्छी फिल्म? वीर ज़ारा. आपको क्या क्या शौक है और किस किस के चीज़ के शौक हैं? मुझे क्या क्या शौक़ है? मुझे काफ़ी चीज़ों का शौक़ है. मुझे पहाड़ों में रहने का शौक़ है, डेजर्ट में रहने का शौक़ है, और जब बहुत ज़्यादा तंग आ जाता हूँ, जो रूटीन जो लाइफ है जो काफ़ी बिज़ी होती है, तो मैं पहाड़ों की तरफ चला जाता हूँ. शिकार का शौक़ है मुझे. सुनिए तो सरदार साहब के क्या मज़े मज़े के शौक़ हैं. शिकार के लिए भी जाते हैं? बिल्कुल. किस किस का शिकार करते हो सरदार? ज़्यादातर पहाड़ में शिकार करता हूँ. आप चले, आपको पहाड़ की भी सैर करा सकता हूँ. हाँ यार, मेरा ही शिकार कर दिया वहाँ तो मैं बेचारी क्या करूँगी वहाँ पर? मैं दूंगा आपको, सिक्योरिटी मैं दूंगा. हाँ, आपके करीब कोई नहीं भटकेगा. Especially since Dick Cheney, you know. I mean, after he killed the man, I've been so scared, really. नहीं, मुझे आप पे पूरा भरोसा है सरदार साहब. तो सुनिए, कब जाते हैं शिकार के लिए? महीने 2 महीने में एक दफ़ा तो चला जाता हूँ. हाँ. सीजन में. लेकिन मुझे तो शिकार का सोच के हंसी सी आ रही है. क्यों हंसी आ रही है आपको? मैंने कहा गोली सही निशाने पे लगाइएगा. Could I ask one little वैसे question? मेरा निशाना कभी चुकता नहीं है. वैसे इस मामले में मैं भी आपकी टक्कर की हूँ. मेरा निशाना भी कभी नहीं चुकता. चलो देखते हैं. हाँ, देख लेंगे फिर सरदार साहब. पहाड़ें गवाह रहेंगी. ठीक है. क्या कहा तानिया? I was actually wondering, how do you feel about there's a huge influx of sort of the Middle Eastern sheikhs and stuff that come in and hunt. Yeah, that's how do you I'm feel against about it. that? I'm very much against it. Thank Because Right Against behind the you. sheikhs or them coming here? Against the foreigners who come here. Okay. Against the Yeah. foreigner, because I don't, because देखिए हम अगर उनके, It's a cordon of our because we land can't go and there that's for hunting or whatever, and they come, they are invited by the government, and that's wrong. I mean, especially अगर मेरा area हो, I will never allow them. That's Hi, good you to know, hear, yeah. I was once going to go to Dubai to participate in this new quiz program. कौन बनेगा मेरा अरबपति? But then I decided Amitabh's crorepati is better. चली गई वहाँ पर. You know, Amitabh met me and greeted me so nicely. But then I got convinced. I said कि no, मैं करोड़ रुपया लेकर क्या करूँगी? इतने करोड़ पहले संभाले नहीं जाते. मैंने कहा let some other poor child win this money. Probably he'll be able to put it to better use. सरदार साहब, चलिए ये तो तय हुआ कि आप मुझे शिकार पर लेके जा रहे हैं. तानिया, Where am I taking you? That's the next question. तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई. Seeing you after such a long time, it was lovely having you over, and I'm very happy for you, and I hope and pray कि इंशाल्लाह you have an amazing life. इसी you तरह very काम much. करती रहो, अच्छा सा, इसी तरह प्यारी सी दिखती रहो. It's lovely to be here. Thank you so much really for coming, Sardar Sahab. Nabeel, it was lovely having you My pleasure. and seeing you after such a long time. But अब गायब ना होना. अब तो खैर हमें शिकार पे भी जाना है. या शिकार होकर आना है, क्या किसको क्या पता. मुझे यकीन है कि आज की इस शाम सरदार नबील गबूल से मिलकर, तानिया शफ़ी से मिलकर आप सबको भी बहुत खुशी हुई होगी. देर बहुत हो चुकी है और शिकारी पास बैठे हैं, इसलिए मुझे आपसे इजाज़त लेनी होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी with two very exciting personalities. Until then, you take care of yourself. Khuda Hafiz. Nawazish.